कभी रिकॉर्डिंग भूल जाऊं तो you should remind me. Sir. So this question is clear to you all? Yes, sir. Any other question? Sir, question 26. Question number 26. Yes, sir. Question number 26. See, A and B are partners in the ratio 3:2. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The firm maintains fluctuating capital accounts and a balance of the same was 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Their drawings for the year is 30,000 each. As per the partnership deed, interest on capital 10% on the opening capitals had been provided to them. Calculate opening capital. आपको देखिए ये closing capital दी हुई है 31 मार्च 2020. देखिए सबके सामने बुक खुली होनी चाहिए. ठीक है. तो ओपनिंग कैपिटल निकालना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. A and B. A and B. ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है ऑलरेडी. ओपनिंग कैपिटल 1,60,000 and 1,40,000. 1,60,000 and 1,40,000. इसमें हम ड्राइंग्स ऐड कर देंगे. We will add drawings 30,000 each. यानी 30,000 and 30,000. Net profit is given. Calculate opening capitals of the partners given that profit was 90,000 minus net profit. Net profit आपको 90,000 दिया हुआ है. It should be distributed in A and B in the ratio 3:2. Clear? तो net profit आपका 90,000 दिया है तो 3:2 में डिवाइड कीजिए. 90,000 को 3:2 में डिवाइड कीजिए. $11,400. ठीक है. 4,000 and 36,000. What? Yes. Any comment? Board is visible to you? Yes. Wait a minute. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, it's visible. Yes. Is it clear? So opening capital will be 1,36,000 opening capital. Opening capital will be 1,36,000 and 1,34,000. Clear? माइनस का मतलब ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है. Sir, but the answer is coming different. What? Sir, opening capital is 1,38,364 and the second one is 1,31,636. One by one, please. One by one. Yes. One person can Sir, I'm speak. saying that the answer is coming different. What is the answer? Sir, our answer is 1,36,000 and 1,34,000. And in And the there? book it is given 1,38,364 is given. 1,38,000.
364 is the answer in book. Wait a minute. Sir, interest on capital is also given. Sir, interest on capital. Yes. Sir, something would be related with interest on capital. Sir, it is given 10% per Yes, I annum on know. opening capital. There But must there be something also answer related will to not be interest on capital. And when we don't know, it is now I understood. Now I understood. Beta, have you got calculator? I am calculating. 1 second. 1 second. Where is the calculator? So 1 lakh 30 interest on capital is 10%. ए का ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है बच्चों? Sir, 1,38,364. 1,38,364 मेरा आ गया है, लेकिन मैं समझाऊं कैसे? देखिए, अगर हमें ये आपकी कैपिटल आई है, इसमें अभी इंटरेस्ट निकालना बाकी है। ये फाइनल कैपिटल दी हुई थी जो 1,60,000, इसमें 1,60,000 में ड्राइंग्स माइनस हो चुकी थी, नेट प्रॉफिट प्लस हो चुका था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस हो चुका था। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये माइनस करेंगे तब हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने ओपनिंग, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब यहां पर ये है कि ये फाइनल कैपिटल है आफ्टर डिडक्टिंग ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमने ऐड कर दी, आफ्टर एडिंग नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो चुका है ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में। तो ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा, तब हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. At least raise your hand. Raise your hand. Okay. Okay. So अब now listen carefully. Listen carefully. Now we have to find out interest on capital. हमको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है। ये हमारा जब ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आ रही थी? फिर से बताइए एक बार आंसर। 1,38,364. 1 सेकेंड। मेरे में तो आंसर ही नहीं है, पीछे दिए होंगे। 1 लाख
Yes, One say lakh again. 1,38,364. 1,48,000. 38. 38,000. Yes, sir. Interest on capital आपको दिया हुआ है 10% per annum. It must be 28. It must be, one second. Where are the answers? Sir, Sir, the just answers below are the given just question. below the question. Sir, just below the question. Yes. The answers are just below the question. अच्छा वो, sorry. There is something wrong I am doing or what? ये मैंने कैलकुलेट सही किया है 1,60,000 plus 1,90,000 minus 54 Yes, sir. ये मैंने कैलकुलेट करके सही निकाला है 136 Yes, sir. Yes, sir. yes Yes, sir. 90 minus 54 1,36,000 1,34,000 today I will solve this question and send it to you. I'm just wasting your time. It will be solved. It will be solved. I will solve it and send it on the WhatsApp. Okay, there is slight confusion. I will solve it and send it to your WhatsApp group. Okay? Is it? Okay, this question I will solve and send it to you. Now, any other question? Any other question you want to ask? Any other question? Better keep solving the questions. Keep solving the questions and ask me if you have any problems. And write the question on the WhatsApp group and I will answer in the class. But solve your questions in the fair copies. This year, we are going to check your fair work also. Make a copy and solve the questions as many as you can fairly. Okay. This is it for today. Solve till question number 42. 42 तक आप 42 yes. You can also solve 43, 44, 45. Solve question number till question number 45. ठीक है? And in your fair copies. Thank you so much. I will solve that question 26 and send it to you today itself. Thank you. Thank you, sir.